कहते थे, और उससे भी पहले एकेडमिक स्टाफ कॉलेजेस कहा जाता था जिनको, उनको ये बहुत ही अच्छे तरीके से चला रही हैं. We extend a very warm welcome to you, ma'am, on the behalf of Thank you so very much, ma'am. That is more than sufficient for your kind words. And without wasting time, I think I'll start the program because I have a meeting lined up. We are expecting governor to sit in our campus on 15th. Okay. So today they have called the HOD. So therefore, I just thought that okay, chalo, thoda time bhi change ho gaya. So it will be convenient for me to attend the meeting as well. So thank you. And the topic which has been assigned to me to take today is on student diversity and inclusive education. So in our 1.5 hour session, I'll try to complete it by 1 hour, 10-15 minutes. After that, we can have question answers. So following will be the content of the session. We'll understand about the diversity. We'll see the definition of diversity and how diversity is there in our Indian higher education. What kind of diversity is prevailing in Indian higher education, and then how student diversity enriches the learning environment. Diversity brings a lot of rich experience in the classroom. We'll see that how it happens. Then after that, definitely the second point is inclusive education. What is inclusive education? The aims and objectives of inclusive education. What are the principles of inclusive education? One thing which I have not mentioned is the barriers of inclusive education. There are certain barriers that also will check that what are the barriers which again is hindering, kind of causing hindrance in going in for this inclusive education. And the last but not the least, we'll also check upon what are the different approaches by the government of India for promoting inclusive education in higher education. So these are the points which we will touch upon in this session of mine. So let us begin with the diversity part, that because the topic itself is student diversity and inclusive education. So let us understand about the diversity. So it says that the practice or quality of including or involving people from a range of different social and ethnic backgrounds and of different genders, sexual orientation. Like, within the classrooms, we have people or the students from different socioeconomic background. We have people from different religious background. We have people from different, linguistic background. And we have people from different, even age group is different, because ever since this NEP has come, so that age bar also has been lifted. So within the classroom, you may find, a person of 18-year-old student is also there in the classroom, and a student who is around 22-year-old also, he or she is also sitting in the classroom. So age-wise also it's different. Then gender may be, aap dekhiye to gender may be it's not just only male, female. Now we are also talking about transgender, जो कि करीब आप यदि ऐसे देखें transgenders का, तो कभी कोई किसी भी हायर एजुकेशन में उनके लिए कॉलम भी नहीं होता था, बिकॉज हम जब फॉर्म्स भरते थे एडमिशन फॉर्म्स, so it used to be only male and female. But now that government is also promoting education to the transgenders. तो ट्रांसजेंडर का भी एक कॉलम रहता है कि भाई आप यदि ट्रांसजेंडर हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि दैट यू आर डिप्राइव्ड ऑफ टेकिंग education. So not just only in school but even in higher education. Similarly, for sexual orientation, there could be a homosexual people are there in the classroom, and that does not mean कि आप उनको ऐसे बच्चों को जो sexual orientation जिनका रहता है ऐसे कि तो आप उनको जो है बोले कि भाई नहीं we will not give admission to some such students. So it is not like that. So basically to include people from all different segments of the society there in the classroom of higher education. So that is what is called as diversity. I mean, of course, as religious backgrounds भी अलग होते हैं, spiritual beliefs भी अलग होते हैं. तो सब तरह के students जो हैं अभी that you will get to see them in the classroom there in the universities or colleges. So let us move further to understand the concept of diversity encompasses acceptance and respect. This is very important.
that no matter from whatever religious background, spiritual beliefs that you are from, whether you are an upper caste person or a lower caste person, whether you are very coming from an elite family background, or coming from a very poor background of this thing, like koi farmer ka bachcha hai, koi rickshaw wale ka bachcha hai. So that is key, that it basically diversity encompasses acceptance. You have to accept all kind of students in the classroom, and also need to give respect to each other. ठीक है, यदि कोई इंग्लिश मीडियम से आ रहा है, कोई हिंदी मीडियम से आ रहा है, मतलब vernacular background से आ रहा है, but then we have to give respect, because as we know that higher education is one thing with which we say that किसी भी कंट्री का यदि आप डेवलपमेंट वो देखेंगे तो it comes only because of the education. So if you want the country to progress or to grow, therefore we need to say kind of have people from all different segments of the society, that they all come in the classroom, they all come and take admission in higher education institution. Then only the country will progress. So therefore diversity encompasses acceptance and respect. It means understanding that each individual is unique and recognize our individual differences. This is so important. Within the family also, each one of us, भले 4 लोगों की family है, husband, wife and 2 kids, but each of us, we are different in nature. We are unique and we are not having common traits. किसी को साउथ इंडियन खाना पसंद है, किसी को नॉर्थ इंडियन खाना पसंद है, किसी को स्पाइसी पसंद है, किसी को नॉन स्पाइसी पसंद है. So see, within the family also, we are so different from each other. And this is what in diversity means, that we recognize our individual differences. And not only we recognize our individual differences, but we respect our individual differences. यदि किसी को अच्छा लगता है नॉर्थ इंडियन खाना, तो आपको ही मालूम है, जैसे your mother is preparing North Indian dishes one day, so the next day definitely she'll prepare South Indian dishes. किसी दिन थोड़ा मिर्च मसाले वाला खाना है, किसी दिन bland खाना है. So then that is what is that. Not only we are having different interests, we are different from each other, but at the same time we have to respect our individual differences also. So individual differences and similarities add to the richness and texture of the educational experience. This is very important, क्योंकि एक ही तरह के जब लोग रहेंगे क्लास में, है ना, like there will be no differences, so there is not going to be any learning. When there are people coming from different background, socioeconomic status alag hai, unka religion alag hai. There could be a person who is disabled, there could be a person from different culture, different language that they are speaking. तो उससे क्या होती है, richness होती है क्लास में, जो है बहुत तरह के नए तरह के उनके perspectives भी अलग अलग होते हैं. So perspectives अलग होते हैं, तो आपको समझ में आता है कि ये भी ऐसा भी होता है, ऐसा भी है, ये कल्चर में, इनके कल्चर में ऐसा भी होता है, हमारे कल्चर में तो ऐसा नहीं होता. So this is how you learn, तो differences जो है, it brings lot of richness and texture in the classroom, and वो एक तरह का जो experience है वो बहुत जरूरी है, because ultimately when the students they pass out and they go in the community or in the society to work, तो ये society में भी तो अलग अलग तरह के लोग होते हैं ना. You have people like, आप हमारे ही organizations की बात करें, when we look into this thing of background, when we look into the university or the college atmosphere, तो वहाँ टीचर्स भी अलग अलग होते हैं. जैसे फॉर इंस्टेंस वी हैव पीपल हु आर फ्रॉम महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के हैं तो उनके कल्चर अलग है. देन वी हैव पीपल फ्रॉम यूपी, वी हैव पीपल फ्रॉम साउथ इंडिया ऑल्सो. सो कितने तरह के लोग जो हैं हमारी यूनिवर्सिटी में टीचर्स के लिए हैं. सिमिलरली भाई, दिस इज अ वर्क प्लेस. तो जब ये बच्चे वर्क प्लेस पे जाते हैं, when they go and actually start doing things in the society, so definitely उनको पता चलता है कि this is how they are supposed to behave with each other. This is how they need to give respect to each other's culture also. No matter whatever is their gender, it can be a person, as I said कि अब तो transgenders हैं, उनको भी नौकरी मिल रही है. And if you go to UN bodies, तो वहाँ तो स्पेशली लिखा जाता है कि ट्रांसजेंडर्स आर encouraged to apply.
not in Indian context I'm saying, but like in UN bodies आप देखिए, UNICEF में देखिए, WHO में देखिए, उनके वहाँ पे जो है, जैसे I've also worked in one of the foreign organization, तो वहाँ पे भी लिखा था कि transgenders are encouraged to apply, so they will be given equal preference and treatment. So इस तरह से क्या होता है कि जब हमारे यहाँ हम लोगों को फिर differences और similarities किस तरह से जो है, it brings lot of richness in the educational experience. आपको पता चलता है, because classroom एक तरह का model होता है जो आपको एक society में काम करने के लिए kind of it trains your mindset. तो ये जो चीजें हैं ये diversity में count होती हैं. So this is just a picture that everyone is unique. कोई इस्लाम धर्म को follow कर रहा है, एक disabled student भी है. So all kind of people are there in the classroom. So moving ahead, let us see one or two definitions or definition of diversity. Diversity, again, it says the inclusion of individuals representing more than one national origin, color, religion, socio-economic status, sexual orientation. ये तो जो डाइवर्सिटी का जो मेन जो कल्चर पहले जो एग्जिस्ट करता था, इट यूज्ड टू बी इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज. आप यदि फॉरेन कंट्रीज की बात करें, if you go and say study in US or you go and study in some European universities, तो आप जैसे यूके में कोई जाके पढ़ता है तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है. कम से कम अपने इंडियन कंटेक्स्ट में देखें, इंडियन इंस्टीट्यूशंस में तो इतना ज्यादा डाइवर्स ग्रुप नहीं है. बट व्हेन यू गो टू अ फॉरेन कंट्री, तो जैसे मैं बताऊं कि वहां पे तो यू हैव पीपल फ्रॉम एशिया, सो दे आर कॉल्ड एज एशियंस. एथनिसिटी की बात करें, दे आर कॉल्ड एशियंस, दे आर कॉल्ड पीपल, स्टूडेंट्स आर देयर फ्रॉम अफ्रीकन कंट्रीज, सो दे आर कॉल्ड एज अफ्रीकन. देन देयर आर पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम जापान, चाइना, सो दे आर कॉल्ड टर्म्ड एज येलो. एंड यदि वहाँ के जो लोग हैं, दे आर कॉल्ड एज वाइट, दे आर टर्म्ड एज वाइट. तो इतने तरह की एथनिसिटी एंड ये हैं वहाँ पे. रेस है, रेस में भी आप देखिए, यदि रेस की बात करें तो देयर आर पीपल से हु आर अगेन स्पीकिंग स्पेनिश. तो स्पेनिश में भी केवल एक तो यूरोप में है वो अलग स्पेनिश बोल रहे हैं, लेकिन देयर आर पीपल इन मैक्सिको, दे आर आल्सो स्पीकिंग स्पेनिश. उनका कल्चर अलग है. वहाँ स्पेन के कल्चर से मैक्सिको का कल्चर इज टोटली डिफरेंट. सो ये जो है इतना तरह का डाइवर्स ग्रुप आता है फॉरेन कंट्री के यूनिवर्सिटीज में, इतना तो हमारे यहाँ है ही नहीं. देन ऑफ कोर्स एज आई सेड कि वहाँ पे भी अफ्रीका में से जो स्टूडेंट्स आते हैं, दे आर फॉलोइंग क्रिश्चियनिटी, दे आर फॉलोइंग, they are also from Muslim background, or like they are following the Muslim religion. And यदि आप इधर आते हैं इधर फिलीपींस एंड चाइना वगैरह के, तो दे आर ऑल्सो फॉलोइंग बुद्धिज्म. तो इतने अलग, इतना वास्ट वो डाइवर्स ग्रुप रहता है स्टूडेंट्स का, मतलब लाइक. बट देन स्टिल दे आर बीइंग टॉट देयर इन द क्लासरूम. टीचर्स आर ओरिएंटेड, स्टूडेंट्स आर ओरिएंटेड. वहाँ मतलब हर तरह के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक रिस्पेक्ट और एक एक्सेप्टेंस भी है. This is what we actually in India also we need to say kind of think about, accepting all people from, even though they are from minority groups में से जो लोग आते हैं, कोई यदि क्रिश्चियन है, कोई यदि एंग्लो इंडियन है, कोई यदि जैन धर्म को फॉलो करता है, तो वी नीड टू एक्चुअली एक्सेप्ट ऑल काइंड ऑफ स्टूडेंट्स in our institution. This is what we have to actually understand, and this is what we have to learn, and we have to give respect also. So ये जो चीजें अभी इंडिया में इतना नहीं है. That's why now we are talking about this particular thing, that is student diversity. There is another definition which has come from Oklahoma State University, जिन्होंने define किया है learner diversity. They have talked about not student diversity, they have talked about learner diversity. Learner diversity usually is related to the ethnic background of students. It is, however, a much broader concept. Anytime a student is different from the rest of the student in a class, that student is diverse. अरे एक भी स्टूडेंट यदि वो अलग है बाकी स्टूडेंट से, say for example, यदि एक स्टूडेंट आपके क्लास में है who is visually impaired, जिसको हम लोग VIPs कहते हैं, so हम कहते हैं कि भाई that student is a diverse, is bringing diverse culture or maybe diverse background, what do you call it, उसका जो पूरा वो है उसको डाइवर्स कहेंगे. मतलब
क्लास में एक VIP है या डिसेबल्ड, फिजिकली डिसेबल्ड है, तो और बाकी सब एबल्ड है, you know, rest of the students are all able. So even just one student is who is different from others, so then we call it that student is diverse. And diversity again can relate to gender, sexual orientation, socioeconomic status, ethnicity, country of national origin, etc. So this is another definition which has been given by the Oklahoma State University, which is in USA. Now, why there's a need to understand diversity in higher education? जैसे मैंने आपसे बोला ना कि हमें अचानक क्यों डाइवर्सिटी की समझने की जरूरत पड़ गई. पहले भी तो स्टूडेंट्स होते थे, पहले भी तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में अलग अलग तरह के बच्चे आते थे, लेकिन अभी क्यों अचानक इसके ऊपर बातचीत करने के लिए बोला है और इसको समझने के लिए बोला गया है. सो नाउ दैट इफ यू सी दैट over the last few decades, India's higher education has grown considerably. जो पहले हम यदि हिस्ट्री देखें अपने हायर एजुकेशन सिस्टम का, यूनिवर्सिटीज का, कॉलेजेस का, so you'll find that then the students used to take admission in colleges or the university. They all used to come, they used to be from elite group. मतलब जो हायर सोशियो इकोनॉमिक जो स्टेटस के लोग स्टूडेंट्स थे, they used to come and take admission in the colleges. क्योंकि यदि आप ऐसा इंडिया का हिस्ट्री देखें तो आप देखोगे कि केवल जो ब्राह्मण्स हैं और जो क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं, only these children of some such families used to come, and they used to come and study in the colleges and the universities. मतलब उनका जो लेबर डिवीजन था, लेबर डिवीजन मतलब यदि बहुत गरीब तबके के जो लोग थे, they never used to come for forward for higher education, and उनको लगता था कि भाई classification was some such like that, कि जो अब आप देखिए, अब now you must be reading it in the newspaper, you must be hearing some such news कि जो रिक्शा पुलर हैं, उसका भी जो बच्चा है वो JEE क्रैक करके and he's taking admission in IITs. और या कोई सब्जी बेचने वाला जो सब्जी वेंडर है, जो वेजिटेबल वेंडर है, उसकी लड़की जो है, शी इज क्रैकिंग नीट एंड शी इज टेकिंग एडमिशन इन अ मेडिकल कॉलेज. तो पहले जो था, इट यूज्ड टू बी द स्टूडेंट्स यूज्ड टू बी ओनली फ्रॉम सम सच एलीट बैकग्राउंड, जिनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बहुत अच्छा था. ओनली दे सम सच स्टूडेंट्स यूज्ड टू कम एंड टेक, दे यूज्ड टू बी इन द क्लास. सो नेचुरली देयर वाज नो डाइवर्सिटी एज सच. यदि देखिए तो डाइवर्सिटी थी ही कहाँ, क्योंकि वो एक ही सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के एक ही तरह के लोग थे जो क्लासरूम्स में पढ़ते थे. बट नाउ देयर इज अ शिफ्ट इज फ्रॉम एलीट स्टेज टू अ मैसिफिकेशन स्टेज. अब आप देखिए कि अभी के जनरेशन जो क्लास में आ रही है हमारे हायर एजुकेशन में, तो उसमें तो सोशियो इकोनॉमिक, जैसे आई जस्ट नाउ गिव यू द एग्जांपल ऑफ वेजिटेबल वेंडर या ऑटो रिक्शा पुलर, इस तरह के स्टूडेंट्स भी हमारे क्लास में आ रहे हैं. सो नेचुरली इट हैज कम टू अ मैसिफिकेशन स्टेज. और NEP में तो और भी जो है, जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है अभी जो at present the GER is 27.1%. okay, and जो NEP का डॉक्यूमेंट है वो ये कहता है कि by 2030 अभी क्या चल रहा है 24. So right now the GER gross enrollment ratio is only 27.1%. और जो NEP का डॉक्यूमेंट है वो क्या कहता है कि by 2030 they want to increase the GER to 50%. So 27% तो अभी ही है और 6 साल में उसको they want to make it to 50%. तो आप सोचो, जब इतने 50% स्टूडेंट्स हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आएंगे तो डेफिनेटली कितना, मतलब इट इज अ मैसिफिकेशन स्टेज. मैसिफिकेशन में मतलब हर कम्युनिटी के हर सेगमेंट का जो बच्चा है वो उनका NEP के हिसाब से ये कहना है कि दे ऑल विल बी studying there in higher education institutions, be it your college or be it your university or be it your community college or whatever. चाहे आपका इंजीनियरिंग कॉलेज है, चाहे आपका मेडिकल कॉलेज है, तो आप एलीट स्टेज से मैसिफिकेशन स्टेज पे हम आ गए हैं. Therefore, there is a need for all of us to understand about diversity. By 21,
2021, the number of students in higher education in India has grown to 4.41 crore, which is the world's second largest population existing in Indian higher education system. By this is already like we have crossed some second number pe hai after USA. Over the years, the enrollment of students from all sections of society, particularly from weaker and disadvantaged sections, such as girls, SC, ST, OBCs, and linguistic, ethnic, and religious minorities have increased. And because owing to the increased inflow of students from weaker and disadvantaged sections, classrooms and college universities are becoming highly diverse. There has always been diversity in the classroom, but in today society, it is important to embrace it and make a positive use of it. मतलब diversity तो पहले भी थोड़ी बहुत होती थी, but इतनी ज़्यादा diversity नहीं होती थी. अब तो क्या है कि आप देखिए, यदि आप क्लासरूम में की बात करें तो you'll find more female students in the class than that of boys. Females are coming up for higher education, जबकि पहले के समय यदि देखें तो हमारी ग्रैंडमदर के समय तो मतलब हम अब कभी कभी हैरान होते हैं कि हमारी ग्रैंडमदर जो है, जिन्होंने केवल क्लास 5 तक की उनकी पढ़ाई हुई है, क्लास 5 के बाद उनकी जो है शादी हो जाती थी. तो हमारी जो ग्रैंडमदर थी, वो कहते थे आपने क्लास 5 तक पढ़ाई करी है. और जो हमारी पैटर्नल ग्रैंडमदर थी, वो तो स्कूल ही नहीं गई थी. शी नेवर वेंट टू अ स्कूल. She was not just literate, she was not educated. और बस लड़की हुई, शादी कर दी. And abhi it is totally a different scenario altogether. So more females are coming, they are taking admission. Now more say socioeconomic disadvantaged students are coming to SC, STs and even Muslim जो girls हैं वो भी आ रही हैं. मतलब हमारे यहाँ बहुत कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं, कश्मीरी भी हैं, प्लस जो दूसरे मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं वो भी हमारे यहाँ पे हॉस्टल्स में रहती हैं. तो उनको देख के पता चलता है कि अभी they all have actually started valuing this education, especially higher education. पहले तो ऐसा नहीं होता था, बट अब इतने सारे तरह के बच्चे जो हैं वो क्लासरूम्स में आते हैं. सो आप सोचो कितना डाइवर्सिफिकेशन हो चुका है, मतलब हायर एजुकेशन कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी हो चुकी है. एंड दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, that we need to accept it and make positive use of it. Diversity is essential to have better relationship with one another, but it can be extremely difficult to embrace diversity, especially when people have preconceived prejudices. ये तो बहुत ही मतलब आप सोचो कि कहते हैं कि डाइवर्सिटी को जो है एम्ब्रेस करो एंड मेक पॉजिटिव यूज ऑफ इट, बट एट द सेम टाइम यदि आप ही बात करो तो स्टूडेंट्स में भी और टीचर स्टूडेंट में भी, और स्टूडेंट्स कोई फीमेल स्टूडेंट है वो भी मुस्लिम स्टूडेंट है, तो दे विल नॉट बी इंटरेक्टिंग मच, दे विल नॉट बी इंटरेक्टिंग बिकॉज उनका ओरिएंटेशन ऐसा नहीं है. पार्टिसिपेंट, आई होप आई एम ऑडिबल, क्योंकि देखो हम आपको देख नहीं पा रहे हैं and I really have no idea whether I'm audible or not. Please just let me know if I'm not audible at any particular point. Am I audible? Ma'am, you are audible, but you are on the same PPT. Oh, acha, matlab slide is not moving? Yes. Oh, but I have come to the need to understand diversity in higher education. Let me check it again. No. Let me check it again. I'm so sorry. अच्छा हुआ आपने बता दिया सर, क्योंकि देखो हम देख नहीं पाते ना. So is it moving now? Is it moving? Yes. So should I leave it like this only? क्योंकि मैंने उसको slide show पे कर दिया था. So is it visible to you properly? That need to understand diversity in higher education. I'm talking about this one. Yes, ma'am. Yes. Okay. So is it okay? यदि मैं छोटा रखती हूँ तो आपको दिख रहा है तो then in that case at least I'll also be able to. Yes, screen clear. Okay, so I was talking about that why that it is I was giving you the example of male teacher. A teacher is male and he is Hindu, and there's a student in the classroom who is a female and she is from Muslim origin. तो आप देखो कि वो जो है उनका ओरिएंटेशन ही ऐसा है कि हम प्री कंसीव प्रेजुडिसेस में रहते हैं कि हम ज्यादा बात नहीं करेंगे उनसे. यदि हम ज्यादा बात करेंगे तो दे पीपल में कंसीडर कि अच्छा ही इज हैविंग सम इंटरेस्ट इन दिस गर्ल एंड वेयर शी इज फ्रॉम अ मुस्लिम ओरिजिन, और उससे क्यों ज्यादा बात कर रहे हैं. या एक लड़का है क्लास में
and there's a student, female student, she is Muslim, यदि वो ज्यादा बात करेगा तो भी उसको बड़ा मतलब लोग कहेंगे oh she is talking to a Muslim girl, or a Muslim boy talking to a Hindu girl all the time. तो ये जो है ऑलरेडी लोगों के प्री कंसीव प्रेजुडिसेस हैं, वो भी मतलब it is a kind of a challenge, you know, that even that you don't have any vested interest, लेकिन यदि आपने थोड़ा सा उसको ज्यादा हैंड होल्डिंग कर दिया, उसको ज्यादा इंटरेस्ट शो कर दिया, तो लाइक पीपल से क्या, अरे बाप रे देखो ये तो उस तरह के इतना मॉडर्न बनने की कोशिश कर रहा है, और ये ऐसा है वो वैसा है, यू नो, लाइक कितनी तरह की बातें हो जाती हैं. So diversity, we know it is essential to have better relationship with another, but at the same time it is difficult to embrace diversity. This is what we need to actually understand, कि हमारा जो टीचर्स का जो ओरिएंटेशन है ना, वो भी ऐसा नहीं है. और हम लोग क्या होता है कि that many a times it happens that we already have some preconceived prejudices, पहले से ही समाज का ऐसा prejudice बना हुआ है. So therefore we also kind of, you know, keep distance, कि भाई इन लोगों से थोड़ा दूरी रहो. हम लोग भले जनरल कैटेगरी गए तो हम SC/ST वालों से ज्यादा नहीं मिक्सअप करेंगे, या SC/ST वाले खुद भी they themselves are not, you know, not very comfortable talking to some such students, you know, who are coming from upper middle class or upper class. उनके लिए भी इस तरह से मर्ज होना, लोगों के बीच में आपस में बातचीत करना, you know, they also are kind of within the classroom also, they are in the classroom, they are the part of the classroom, but still they are kind of थोड़े से जैसे कट आउट रहते, मतलब थोड़ा सा कट ऑफ रहते हैं, बहुत ज्यादा मिंगल नहीं करते, बहुत ज्यादा मर्ज नहीं करते. सो दिस इज very important for all of us to understand, because now they are already part of higher education, they are already part of the classroom, so we cannot say kind of, you know, treat them differently. Even they have to understand, and we as a teachers also we need to understand कि भाई नहीं, ये हमें उनको, they are part of the say classroom and higher education, so we need to say kind of respect their individual beliefs and the individual culture, but then we need to put them together, we need to integrate them there together in the classroom. So diversity in Indian higher education, थोड़ा सा वैसे ही किस तरह का डाइवर्सिटी क्लासरूम्स में रहता है या एजुकेशन में रहता है, यही थोड़ा सा हमने कुछ पॉइंट्स लिए कि जेंडर डिफरेंसेस होने लगे हैं, जैसे मेल फीमेल ट्रांसजेंडर्स आर देयर, सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस आर देयर इन हायर एजुकेशन, caste wise also we have upper caste, we have people from OBC, SCs, STs, religious background and marital status. Nowadays even you know, married girls are coming and taking admissions there in the classroom. पहले तो क्या होता था, unmarried students ही होते थे, and after marriage, you know, होता था कि भाई अब तो अपना घर संभालना है, you have to take care of your family, you have to take care of your children. But nowadays you will find many of the married say girls, they are also attending the, you know, classes there in higher education. Geographical location also wise also diversity is there. अब देखो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, in JNU you'll find people, students from Northeast, you'll find the students from Kashmir, you'll find students from South India. So इनके जो है उस तरह से भी कितनी diversity है JNU में. Then they are speaking, all of them are speaking different language. कोई बंगाली बोल रहा है, कोई असमी बोल रहा है, कोई मिजोरम से है तो they are speaking in English. So साउथ से है तो तमिल बोल रहे हैं, तेलुगु बोल रहे हैं. So language में भी diversity है. Their learning aptitude is different again. There are students who are gifted students and very talented students. There are disabled students. You know, there are students who are having problems in hearing, problems in speech. So इस तरह के भी आपको जो है students class में मिलेंगे. और कल्चरल एंड रेशियल डिफरेंसेस तो है ही है. सो इस तरह की कुछ डाइवर्सिटी जो है वो हमारे इंडियन हायर एजुकेशन में प्रिवेलेंट है. Then meaning of learner diversity. We were talking about student diversity. Now let us move on to the meaning of learner diversity. So classrooms are diverse in terms of types of students and the ways in which they learn. So this is very important कि हर एक स्टूडेंट का अपना लर्निंग का जो स्टाइल होता है वो अलग होता है. So for example, there are students who learn better by seeing something. Now कुछ स्टूडेंट्स हैं जो देख के बहुत अच्छा सीख लेते हैं, and then there are other students who are just you know, good say only say in terms of just by listening they learn a lot. Especially यदि आप विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट को देखोगे, इस तरह के यदि आपके स्टूडेंट क्लास में है तो वो डेफिनेटली जो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट है वो तो लिसनिंग से ही सीखेगा,
और जो बाकी जो नॉर्मल स्टूडेंट है वो तो लिसन भी करते हैं और देखते भी हैं. फॉर एग्जाम्पल they see the PowerPoint presentation, they see it, and also they are able to hear it also. जबकि आपका जो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट है उसको तो जो है कुछ दिखता तो है नहीं, so वो जो है स्टूडेंट वो किस तरह से ज्यादा अच्छा सीख सकता है कि only if he is listens properly and very keenly, so he understands and he listens and he learns. And then there are students who are good at manipulating with something. कुछ जैसे स्टूडेंट्स को कुछ प्रोजेक्ट दे दिया बनाने के लिए, तो वो प्रोजेक्ट जो है डेमोन्स्ट्रेशन करता है, क्लासरूम में प्रेजेंटेशन करता है. देन ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर, एंड द वे दे लर्न अगेन इज वेरी वेरी डिफरेंट. दे लर्न इन डिफरेंट वेज बिकॉज ऑफ द experience, because of their socio-economic and cultural backgrounds. Like for example, यदि कोई गांव का या ट्राइबल एरिया का स्टूडेंट है तो डेफिनेटली उसके लिए तो केवल जो है ब्लैक बोर्ड पे लिखना ही स्कूल्स में क्या, लाइक फ्रॉम व्हाट काइंड ऑफ बैकग्राउंड ही इज कमिंग, व्हाट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट ही इज कमिंग. तो अब देखो गांव के स्कूल्स में या ट्राइबल एरियाज के जो स्कूल्स में, वहाँ कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की फैसिलिटीज नहीं रहती है. वहाँ पे तो टीचर आता है, वो बेचारा ब्लैक बोर्ड पे ही लिख लेता है या कुछ ऐसे ही वर्बली कुछ बता देता है. सो इस तरह से जो है स्टूडेंट्स की लर्निंग का जो बैकग्राउंड है वो भी उनके एक्सपीरियंस, उनके एनवायरनमेंट, कल्चरल बैकग्राउंड के से डिफर करता है. सो डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड क्रिएट्स अ वाइब्रेंट कैंपस एटमॉस्फेयर दैट प्रमोट्स क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग. And in the classroom, diversity applies to learning styles, background, educational backgrounds, language, and support at home. Support at home. Why support at home? Because there are students who are first generation, say students in the university, first generation students in the colleges. उनके यहाँ पे कभी किसी पेरेंट्स ने हायर एजुकेशन में कभी उन्होंने मतलब क्लासरूम्स कभी देखे ही नहीं. They've never visited the college, premises. They've never visited the university. So naturally, उनको जो इस तरह के बच्चे यदि कभी आ भी गए कॉलेज में एडमिशन ले भी लिया, because of the policies जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट है, वो इतनी इस तरह की एक्सेसिबिलिटी दे रही है, और अभी इक्विटी और इक्वालिटी की भी बात समझेंगे, तो इसके कारण इतने तरह के बच्चे हमारे क्लासरूम्स में आ रहे हैं. बट लेकिन उनकी सबकी स्टाइल अलग है उनको, क्योंकि और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनको कि यदि स्टूडेंट बोले कि आई नीड टू बाय लैपटॉप बिकॉज आई हैव टू प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन, तो उनके पेरेंट्स को लगेगा व्हाट इज दिस लैपटॉप, व्हाई इज इट दैट ही वांट्स लैपटॉप, बिकॉज उन्होंने तो कभी लैपटॉप देखा ही नहीं स्कूल में, और अचानक कॉलेज में आके वो बच्चा बोलता है कि हमें तो लैपटॉप चाहिए. सो जब अब आप सोचो कि कितना मतलब कितना डिफरेंट ओरिएंटेशन होता है उन बच्चों का जो ट्राइबल बैकग्राउंड से या रूरल बैकग्राउंड से आते हैं. उनकी लैंग्वेज अलग होती है बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम लोकल लैंग्वेज, व्हाटएवर लैंग्वेज दैट दे आर स्पीकिंग. मे बी अ पर्सन, लैंग्वेज में भी देखो आप ट्राइबल में भी बात करो तो जैसे हमारे यहाँ थोड़े ही दूर पे वी हैव अ प्लेस कॉल्ड झाबुआ, वो बिल्कुल ही ट्राइबल है. हिंदी भी है लेकिन हिंदी प्रॉपर हिंदी भी नहीं है. दे स्पीक उनकी कुछ अलग ही लैंग्वेज होती है, उनका जो डायलेक्ट होता है वो बिल्कुल अलग होता है. बट जब वो हायर एजुकेशन में यदि व्हेन दे टेक एडमिशन, बिकॉज हमारी यूनिवर्सिटी में 40% स्टूडेंट्स हु आर कमिंग एंड टेकिंग एडमिशन, दे आर कमिंग फ्रॉम ट्राइबल एरियाज. वी आर केटरिंग टू द स्टूडेंट्स ऑफ ट्राइबल एरिया 40%. तो अब आप सोचो जब इस तरह के स्टूडेंट्स हमारे क्लास में आते हैं, उनका लैंग्वेज अलग है, उनका सपोर्ट अलग है, उनके पेरेंट्स ने कभी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में या हायर एजुकेशन उसमें कभी they've never stepped in the colleges or in the university. So naturally उनका support system ही अलग है, background is different, language is different. So therefore उनकी learning भी अलग ही होती है. We have to actually come down as a teacher. We have to come down to their level to make them comfortable. Not just comfortable, we have to respect their different styles of learning. We need to respect their background. We need to respect their educational background. We need to respect their language and support at home. First, we need to understand about picture, more creative and more productive working. And then the diversity fosters tolerance. The diversity fosters tolerance. It fosters sympathy and understanding of different cultures, enriching the overall educational experience. जैसे मैंने पहले ही बोला था कि इतना वाइड डिफरेंस है
socio-economic difference is there, language difference है, cultural differences है, तो हमको जो है काफी जो है टॉलरेट होना पड़ेगा और वो ऐसे एक स्टूडेंट एक स्टूडेंट्स के साथ में थोड़ा सा इट इज नॉट दिस, जैसे कहते हैं ना कि भाई उनकी क्या गलती थी, व्हाट वाज देयर फॉल्ट दैट दे वर बोर्न इन सम सच फैमिली, या वो ट्राइबल एरिया के उसमें है, इट कैन बी यस आल्सो, यू नो, हम भी तो हो सकते हैं, यदि उस तरह से सोचे तो हम भी तो वहां पे उससे आ सकते हैं. तो we are lucky that we say grew up in urban city areas, so therefore we are having better exposure, but that does not give us any this thing, you know, to say ki, oh, that student is from tribal area so usko kuch nahi aata, usko, he is having different kind of an experience, he is bringing lot of another kind of an experience, and wo alag tarah ka rich experience class mein leke aata hai, kyunki usne jo hai ho sakta खेतों में काम किया हो, कुछ लेबर करके भी आया हो, उसके पास ज्यादा स्किल, ही इज मोर स्किलफुल देन अस. सिटीज में इतने बच्चे स्किलफुल नहीं होते हैं, लेकिन जब ट्राइबल एरियाज और रूरल एरियाज के बच्चे आते हैं आपके क्लास में, जिन्होंने घर में ऐसे जगह पे काम भी किया अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए, and at the same time attend to the schools also, so definitely they are bringing much more richness in the classroom in terms of experience, work experience, in terms of the skill, which otherwise in the cities if you will find the students are not having that much of skillfulness. तो ये इस तरह का जो एक्सपीरियंस हमारे अभी क्लासरूम्स में आता है, तो साथ में हमारे को ये भी देखना है कि हम एक दूसरे के लिए टॉलरेंट रहें, एम्पैथी रखें, उनको रिस्पेक्ट करें, उनको उनमें वी नीड टू मेक देम फील वेलकम, अदरवाइज व्हाट विल हैपन कि और इवेंचुअली दे विल जस्ट बी टेकिंग ड्रॉप आउट फ्रॉम द सिस्टम, कहेंगे जी हमें तो वहाँ वेलकम ही नहीं होता, हमारे को तो भाषा ही, व्हाट इज बेसिकली हाउ, अरे दूसरा कहता है हमें हार्ड वर्क की जरूरत ही नहीं है, आई एम वेरी इंटेलिजेंट, तो हमको तो क्या पढ़ के जो है बुकिश नॉलेज लेकर के एंड आई कैन स्टिल टॉप द एग्जाम, जबकि वो जो दूसरा बच्चा है जो गांव से आया है उसको तो पता है ना कि कितनी भी मेहनत कर ले कहीं ना कहीं तो वो पीछे रहेगा उसकी, क्योंकि उसकी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इफ यू स्टूडेंट इज कमिंग फ्रॉम अ ट्राइबल बेल्ट, तो उसकी तो लैंग्वेज ही सबसे, जब स्पेशली इफ ही टेक्स एडमिशन इन स्टेम जैसे साइंस टेक्नोलॉजी environment and maths, engineering and maths, sorry, science technology engineering and maths, यदि STEM से फील्ड में जाता है कोई ट्राइबल स्टूडेंट, तो डेफिनेटली वहाँ सब STEM is more about the curriculum is all in English, तो नेचुरली उसको तो यही समझ में नहीं आएगा कि पहले वो भाषा सीखे कि वो हार्ड वर्क किस तरह से करे, क्योंकि हार्ड वर्क तो वो कर लेता है, he works very hard because वो now that he got admission in higher education in the college or in the university, so admission तो उसको मिल गया because of the policies and all that, but then उसको पहले भाषा सीखनी पड़ेगी, और उसके वैल्यूज हमारे वैल्यूज से अलग है, उनके एटीट्यूड हमारे एटीट्यूड से अलग, उनका बिहेवियर इज टोटली डिफरेंट, तो उससे क्या होता है कि student self-awareness is enhanced by diversity. Then student diversity contributes to cognitive development. Cognitive development is all about knowledge. Cognitive is all about head. Head is all about brain. जो उनका डेवलपमेंट होता है, स्टूडेंट डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूट्स टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट. आपका ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, कैसे कि नेचुरली आपको पता चलता है कि ओके इस तरह की भी क्लास में बच्चे आते हैं, इस तरह के भी बच्चों को जो है मतलब उनका इस तरह का ओरिएंटेशन है, उनका इस तरह का बैकग्राउंड है, उनकी इस तरह का उनका जो है कल्चरल वो अलग है, नॉर्म्स अलग है. सो एंड देन it is peculiarly why classroom is peculiarly the marketplace of robust exchange of ideas. क्लास में क्योंकि हर तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, so that is basically there is an exchange of ideas. हमारे जो आइडियाज हैं वो एक तरह के नहीं होते हैं, सबके अलग अलग थॉट प्रोसेस होते हैं, सब अलग यूनिक है, वी ऑल आर यूनिक, सो नेचुरली उनका एक्सपीरियंस से उनके आइडियाज अलग होंगे, सिटी के बच्चों के आइडियाज उनके अलग होंगे, उनके बिहेवियर उनका एटीट्यूड ही अलग होगा. So definitely student diversity contributes to cognitive development by gaining perspectives of peer and they learn from other students aside from the instructors. एक तो इंस्ट्रक्टर से आपकी लर्निंग होती है, दूसरा क्या होता है when the peer are interacting with each other in case की यदि कोई ग्रुप डिस्कशंस दिए क्लास में या कोई प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की बात होती है, तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में you are kind of forming a group. So in that group whereas you on one side you have student who is from
city, this thing from the city, and some students are there from who are from rural background or tribal background. Then एक ऐसा भी स्टूडेंट होगा, कोई मुस्लिम भी हो सकता है उसमें, कोई ऐसा होगा कि transgender भी हो सकता है. So apart from the instructors, they learn from each other. That is peer learning जिसको हम बोलते हैं कि they learn from each other also in the classroom. Student diversity prepares learners for their role as responsible member of the society. जैसे मैंने आपसे पहले ही बोला था कि this is just nothing but a marketplace. एक तरह से मार्केट प्लेस है, बिकॉज सोसाइटी में जब वो फाइनली वो स्टूडेंट पढ़ के निकलता है तो हाउ ही और शी नीड्स टू इंटरेक्ट विद द other members of the society. This is what a classroom also prepares the students, because class में जब आप बिहेव करना सीखते हैं एक दूसरे से, भले आप कल्चरली डिफरेंट है, लैंग्वेज से डिफरेंट है, एज में डिफरेंट है, मैरिटल स्टेटस से डिफरेंट है, आपका जेंडर डिफरेंट है, तो जो आप क्लासरूम में जो आप बिहेव करते हैं हायर एजुकेशन में, वही फिर फाइनली व्हेन यू गो in the society, so you are more responsible citizen when you are going and working in the societies. You are a more mature and responsible citizen. So ये जो है basically जो diversity है, it prepares the learners for their role as responsible member of the society. So then student diversity can promote harmony. This is very important. Naturally it encourages to interact and collaborate with each other. So आपकी harmony भी develop होती है student उसमें classroom में. Then diversity is about again respecting individuals. So this is diversity, equity and inclusion. तो अभी हमने diversity की बात करी कि then people are from different background. So that is how the diversity is there. Their perspectives are different. So that is how the diversity is there. Then we are moving towards the equity. Equity in terms of the policy and the practice. So equity is very important. It's like everyone is having access to higher education, but at the same time, accessibility is not the only thing. You need to have equitable resources be provided to the students. For example, यदि कोई socioeconomic upper class का student है, ठीक है, आपने उसको भी उतने ही resources दिए जितना कि कोई ट्राइबल बेल्ट का या रूरल बेल्ट का बैकग्राउंड का स्टूडेंट है, उसको भी वही रिसोर्सेज दिए. सो देन दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज इक्वालिटी. तो वहां आप इक्वालिटी की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसको तो यदि कोई ट्राइबल बेल्ट का बच्चा है उसको भी आपने उतने ही रिसोर्सेज दिए जो कि सिटी के बच्चा जो है उसको जिसके पास तो ऑलरेडी सारे रिसोर्सेज है, तो डेफिनेटली उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना है. Like for example, I'll just give you a very simple example कि for example यदि एक अमीर बच्चा है और एक गरीब बच्चा है, ठीक है, आपने अमीर बच्चे को भी 100 रुपीज दे दिया और एक गरीब बच्चे को भी 100 रुपीज दे दिया, क्योंकि आप बात कर रहे हो कि भाई हम तो जो है बात कर रहे हैं इक्वालिटी की, तो इसलिए हम 100 रुपीज इसको भी दे रहे हैं अमीर बच्चे को और 100 रुपीज हम गरीब बच्चे को भी दे रहे हैं. तो आपने तो इक्वालिटी की बात करी. बट जस्ट इमेजिन दैट a student who is already having 500 in his pocket every day, he is getting as this thing, pocket money. और यदि किसी इंस्टीट्यूशन ने उसको 100 रुपए रोज के दे भी दिए, do you think he is going to kind of value that? No, he will not. So the thing is कि आप जो गरीब घर का जो बच्चा है उसको आपने स्कॉलरशिप से, फ्रीशिप से और इतना उसको जो है इकोनॉमिकली इतना आपने उसको सक्षम कर दिया या इतना आपने उसको वो कर दिया, रिसोर्सफुल कर दिया कि वो फिर ही विल एक्चुअली स्टार्ट वैल्यूइंग कि भाई मुझे जो है रिसोर्सेज में ज्यादा रिसोर्सेज मिल रहे हैं, बिकॉज आई कैन नॉट अदरवाइज अफोर्ड द education in terms of taking admission into higher education. So definitely he will relish that. और जो एक already जो है सिटी का जो एक elite group का, elite class का, family का जो बच्चा है उसको यदि आपने नहीं भी दिया तो भी उसके लिए okay, because he is able to afford it. So we have to talk about equity, not about equitable things, not about this thing, but about equity, not about this equality, but about equity. So then comes inclusion. जब आप equity देते हैं, मतलब आपने गरीब बच्चे को भी आपने स्कॉलरशिप दिया और उसको पढ़ाने के लिए आपने उसको इनकरेज किया कि भाई आप आओ और एडमिशन लो मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में या ऐसे जनरल कॉलेज में, तो जब आप उसको इतने सारे रिसोर्सेज देते हो तो फिर हम इंक्लूजन मोड पे जाते हैं. दैट इज यू पुट देम टुगेदर. आप भले ही किसी भी सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के हो,
आप डिसेबल्ड हो, आप एबल्ड हो, आपने जो है उनको इक्वल रिसोर्सेस अपॉर्चुनिटीज दी, अपॉर्चुनिटीज आपने बराबर दी, तो उसके कारण फिर जो है आप इंक्लूजन पे आ गए. इंक्लूजन में दैट इज यू गिव देम इक्वल वॉइस एंड देयर विजन. सो वो जो है दैट पार्ट कम्स इनटू inclusion. So we are now moving towards inclusive education. I hope it is clear so far, participants. Any questions so far? If anybody has questions, please ask. अभी लास्ट में मैम एक दो क्वेश्चन लास्ट में पूछे. Okay, fine. Thank you. Yeah, it's okay, ma'am. It's okay. Thank you, sir. Then we are, as I said, we are moving towards inclusive education. So we discussed about diversity, then we discussed about equity, and then now we are talking about inclusive education, because by giving equity, you are kind of, thinking or talking about inclusive education. That is, inclusive education is all about learning knows no bounds, no boundary. Learning has no boundary. That is that you have to make people feel welcomed. You need to give them admission and should not discriminate. So inclusion is about hearing their voices, giving them vision. So the action or state of including or of being included within a group or structure, that is making people feel welcome, not excluding people, and of course respecting each other. ये बहुत जरूरी है. इंक्लूसिव एजुकेशन का यही पूरा प्रिंसिपल ही यही है कि कोई भी जो सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप का स्टूडेंट है, ओबीसी ग्रुप का है, so it is not that they will not get admission. No, they also will get admission. And the thing is that they not only they get admission, but then they need to feel welcomed. Then there should not be any discrimination ki that okay, now some such students have come in the classroom, so इसलिए हम उनको ठीक है, वो तो उनको मिल गया, उनकी चांस है, उनको स्कॉलरशिप दे रही है गवर्नमेंट. बट ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज इफ दे विल नॉट फील वेलकम्ड, एज आई सेड, first 3 to 4 months is very crucial. If the students, even though he or she is getting scholarship and he or she doesn't feel welcome, definitely there's going to be a dropout, which should be the case. You should not exclude people, no matter from whatever cultural origin they are from, no matter what language they are speaking. यदि वो कोई vernacular language बोलते हुए आ रहा है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि भाई क्लास में उसको entertain ही मत करो, उससे बात ही मत करो. We need to respect everyone in the classroom. Inclusive education actually is a new approach towards educating the children, basically with disability and learning difficulties with that of normal ones, within the same roof. Inclusive education helps create cohesive societies. Now that we are moving towards inclusive education, so now here the focus is more on the not only about the socioeconomic disadvantaged group, but also people or the students who are disabled or who are having learning difficulties. जैसे मैंने आपसे पहले ही बोला था कि स्पीच ओरिएंटेड, उनकी किसी की स्पीच प्रॉब्लम है, किसी को हियरिंग प्रॉब्लम है, किसी को देख नहीं सकता, तो उन सभी ऐसे स्टूडेंट्स को नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ में ही बिठा के उनको एक ही रूफ के अंडर उनको पढ़ा के, और हम उनको पढ़ाना भी है, एंड ऑल्सो वी नीड टू क्रिएट अ कोहेसिव सोसाइटी. इनफैक्ट अभी मैंने एक दो मेरे इसी एनईपी के प्रोग्राम्स में एक दो ऐसे भी फैकल्टी आए, और बल्कि अभी भी जो अभी एनईपी का ग्रुप जो मेरे यहाँ चल रहा है, there is one teacher who is visually impaired and he's so sharp, इतने अच्छे questions पूछता है, और इतने ज्यादा he is having so much of information and knowledge. मतलब सभी सेशंस में मैंने उसको देखा है कि he is having some additional things to share. मतलब जो टीचर जो यहाँ मतलब रिसोर्स पर्सन्स आते हैं वो तो बताते ही हैं, but at the same time he is also adding some new things in the session. So आप सोचो कि वो disabled है, तो it is not his fault. He is disabled because of some whatever reasons, but again some such students are very sharp, and so therefore we cannot exclude them from the main group. So the एक जो classroom का जो एक group रहता है या batch होता है, so we need to have some such students also who are having some problems in learning, in terms of कि ठीक है नहीं ठीक से सुनाई कम पड़ रहा है, देखने में दिक्कत है, but then they cannot be excluded. So the inclusive education is basically to help a cohesive society. And as I said कि classroom is nothing but it is a kind of a marketplace where we all kind of learn
to respect each other. We learn to respect our different attitudes and values also. So let us come to understand the definition of inclusive education. It's defined as a learning environment that promotes the full personal, academic and professional development of all learners, irrespective of race, class, color, gender, disability, sexual preference, learning styles and language. So it is basically to promote full personal, academic and professional development of all the learners, no matter whether you are a girl or a boy or a transgender or a person with ability or disability, whether you are having different sexual orientation, whatever is your learning styles, you need to say all of some such people, they are part of one group and under one roof. Everyone is getting equal opportunity to kind of learn in the classroom. So ये एक छोटा सा मैंने एक डायग्राम आप लोगों को समझाने के लिए किया है कि पहले तो हम एक्सक्लूजन समझे. एक्सक्लूजन के समय में क्या होता था कि that the disabled students, they used to have a different kind of different set of colleges, and colleges तो खैर होता ही नहीं था हायर एजुकेशन में. only in the schools, like visually impaired जो बच्चे हैं उनके लिए अलग से स्कूल होते थे. उनके लिए पढ़ाई की अरेंजमेंट्स अलग होती थी. उनको एक्सक्लूड कर देते थे. दे नेवर यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ द कम्युनिटी एंड सोसाइटी. तो उनको जो है टोटली एक्सक्लूड कर देते थे. फिर सेग्रीगेशन की बात आई तो सेग्रीगेशन में धीरे से फिर उनके लिए स्कूल, भाई अब नाउ दैट दे आर डिसेबल्ड, तो इसका क्या मतलब है कि उनको पढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी चाहिए क्या? नहीं, इवन दे आर हैविंग दिस थिंग, having they too have the right to be part of the education system. तो उन्होंने क्या किया, फिर उनके लिए अलग से कॉलेजेस और स्कूल की अरेंजमेंट किया. So they are also studying, but then they are having a different school. तो ये segregation की बात होगी. पहले तो एक्सक्लूड कर दिया, फिर जब उनको बोला कि इट इज इक्वली देयर राइट, उनको सेग्रीगेट करके उनके लिए अलग से स्कूल खोल दिया. देन कम्स इंटीग्रेशन. सो इंटीग्रेशन क्या है? Integration is nothing but it is the same classroom where students of disabled students and able students are put together, but alongside peers they actually get some extra support from the teachers. मतलब आपने उनको बोल तो दिया कि ठीक है जी आप बैठ जाओ, क्लास में बैठ जाओ, बट उनको मालूम है कि भाई they cannot keep pace with the students, normal students. तो बोल दिया कि भाई ठीक है जी, if a person is disabled, physically disabled, तो उसको क्लास नीचे कर दिया और बोला कि हम आपको वहां पे मटेरियल ला के दे देंगे, आपको ऊपर चढ़ने की जरूरत नहीं है. Why? Now that why government is emphasizing on creating the ramp. Ramp क्यों आपको बनाना है? So that some physically disabled student also can reach to the classroom. Lift क्यों लगाना है? So that some such students can easily reach to the classroom. तो पहले क्या होता था कि हमें मालूम है कि भाई वो बच्चा चढ़ नहीं सकता तो उसकी क्लास नीचे है तो उसको नीचे ही बैठा दो, मटीरियल मेथड्स कुछ बुक्स वगैरह एक्स्ट्रा पहुंचा दो और वो बेचारा बच्चा अपने से पढ़ लेगा. सो दिस वाज द केस इन केस ऑफ इंटीग्रेशन कि दे आर पार्ट ऑफ दिस क्लासरूम बट स्टिल दे आर नॉट some extra support is provided, they were not given that equal opportunity. They were not मतलब कहना चाहिए कि रेगुलर करिकुलम में उनका कुछ ऐसा वो नहीं है कि उनको जो है ऐसा मेक फील कराया जाए कि दैट यू आर पार्ट ऑफ द ग्रुप और अ बैच और दिस थिंग क्लासरूम. तो इसलिए क्या होता था कि sometimes separate special education programs are in place within the classroom also. Like they have different education programs, but उसको क्लासरूम से थोड़ा सा अलग ही रखा जाता है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इंक्लूजन. तो इंक्लूजन में क्या है, जैसे हमने पहले ही बात करी इंक्लूजन की कि भाई आप डिसेबल्ड हो, अनेबल टू लिसन हियर हो, आपको दिख नहीं रहा है, आप चल नहीं पा रहे हो, बट देन वी आर सेइंग कि नहीं, वी ऑल शुड बी टुगेदर इन टर्म्स की टीचर्स को जो है अपनी ट्रेनिंग ऐसी करनी है कि नो मैटर whatever the student is and from whatever background he is coming, आपको जो है सबको बराबर से हैंड होल्डिंग करनी है, सबको बराबर से पढ़ाना है, सबको बराबर से ही आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है so that they can grow academically and professionally and personally also. So that's why the focus is now on inclusive education. So this we have already kind of taken example of access, equality and equity कि अब now we are talking about equity and not equality. क्योंकि equality में बात करेंगे तो किसी को फर्क नहीं पड़ना, because equal resources you are providing to everyone is not going to make a change. It is basically we have to kind of give more resources to
disadvantaged group students, disadvantaged in terms of socioeconomic disadvantage also, and physical जो disability वाले हैं उनको भी आपको बराबर से ही, जैसे आप, I give you the example कि यदि बच्चा वो है physically disabled है, तो naturally you need to provide ramp, ताकि वो बच्चा भी रैम्प के थ्रू जो है क्लासरूम में आ सके. मुझे उसी जो एक स्टूडेंट है जो मेरे NEP में जो अभी अटेंड कर रहे हैं, एंड आई वाज टेलिंग यू कि दैट ही इज विजुअली इम्पेयर्ड, उसने बताया कि मैडम हमारे कॉलेज में हमारे यहाँ रैंप बना है, तो सेकंड फ्लोर तक भी इतना ब्रॉड रैंप है कि जो एक स्टूडेंट उनके यहाँ था हु वाज हैविंग बाइसिकल, तो अपनी बाइसिकल चला चला के रैंप के थ्रू ही एक्चुअली यूज्ड टू गो टू द सेकंड फ्लोर एंड वहां पे बैठ के पढ़ता भी था, एंड जब एग्जाम होते थे यूज्ड टू गिव एग्जाम्स आल्सो. तो अब हम इसीलिए इक्विटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि इक्विटी में जब आपने उस बच्चे को रैंप दे दिया या लिफ्ट दे दिया, तो डेफिनेटली सम स्टूडेंट्स विल फील कि ओके दे आर बीइंग वेलकम्ड इन द क्लासरूम. अदरवाइज उसको लगेगा कि हमें तो नीचे बैठा दिया, हमारे को टीचर ने बोला कि वेल गिव यू सम एक्स्ट्रा नोट्स एंड एक्स्ट्रा बुक्स, आप तो नीचे पढ़ लो, आप तो ऊपर नहीं आ सकते, सो यू जस्ट बी इन अनदर रूम. एंड एग्जाम के समय भी आपने उसको अलग बिठा दिया क्योंकि वो ऊपर नहीं आ पाता है. तो दिस इज नॉट शुड नॉट बी द केस. सो वी हैव टू टॉक अबाउट equity. Now, inclusive education. Aims and objectives of inclusive education, that is, you need to give education to everyone. That is basically you need to protect the rights of everyone. जो कि हम गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज बनाई है वो यही बोलते हैं कि दैट प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, एजुकेशन फॉर ऑल, एंड देन डेवलपमेंट ऑफ सोशल कॉन्शियसनेस. डेफिनेटली ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं हमारे यहाँ, तो हमको वी हैव टू लर्न अबाउट द सोशल कॉन्शियसनेस, वी हैव टू लर्न अबाउट डेवलपमेंट ऑफ ब्रदरहुड, and then to improve quality of education. This is the objective of inclusive education. Now, inclusive education के यदि हम justification देखें तो educational point of view से, जैसे मैंने आपसे भी बताया कि यदि कोई बच्चा disabled है या socio-economics disadvantaged groups का है, their cultural origin is different, तो इसका क्या मतलब है कि क्या ऐसे बच्चों को हम मेन स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन में नहीं रखेंगे? इट इज नॉट द केस. सो दैट इज नीड ऑफ ऑल स्टूडेंट्स नीड्स टू बी मेट, प्रिपेयरिंग ईच वन ऑफ देम फॉर द लाइफ. अब किस तरह के भी स्टूडेंट्स अपने हमारे क्लास में आते हैं हर एजुकेशन में, वी नीड टू से काइंड ऑफ डू हैंड होल्डिंग फॉर एवरीवन एंड वी नीड टू प्रिपेयर ईच वन ऑफ देम फॉर द लाइफ. टीचर बेसिकली इम्प्रूव देयर प्रोफेशनल स्किल्स. यहाँ पे जो फोकस है वो टीचर्स के ऊपर है कि टीचर्स को जो है अपना प्रोफेशनल स्किल इस तरह से डेवलप करना है कि वो जो है किसी भी स्टूडेंट में डिस्क्रिमिनेट ना करे, चाहे वो कल्चरल ओरिजिन का फर्क हो तो भी, कोई डिसेबल्ड है तो भी. यदि हमारे ही स्किल्स में कुछ प्रॉब्लम्स है तो डेफिनेटली ऐसा होता है ना कई बार कि हम केवल लड़कियों की ओर ही देख के पढ़ा रहे हैं, लड़कों को देखेंगे ही नहीं, या लड़के हैं तो लड़कों को, कोई लेडी टीचर है तो वो जो है लड़कियों को ही ज्यादा वो करके पढ़ाएगी, लड़कों को देखेगी नहीं, उनसे बात ही नहीं करेगी. तो ये जो चीजें हैं ये हमारे तरफ से भी हमको वी नीड टू इम्प्रोवाइज आवर ओन प्रोफेशनल स्किल्स एंड शुड नॉट बी कि जैसे इस पे मुझे एक जोक याद आ गया. अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने सुना था, सो देयरफॉर ऑन द लाइटर नोट आई एम शेयरिंग इट विद यू ऑल कि मैं उस दिन काफी मैंने कहा ये क्या मतलब, ये कोई ऐसे कोई वैसा बहुत अच्छा जोक नहीं है, बट देन जस्ट आई जस्ट थॉट कि बहुत मोनोटनी हो ना जाए तो इसलिए छोटा सा आपके लिए जोक शेयर करते हैं. वहां पे बोला कि इसरो ने ये किया, अभी जब आपका चंद्रयान वो जो 3rd वाला वो चल रहा था कि भाई साउथ पोल में हमारा जो है जो ये था वो लैंड कर रहा था, तो बोले इसरो ने किया. तो क्लास में टीचर ने पूछा कि आपको इसरो मालूम है क्या? उस लड़के कहते हैं जी मैडम हम तो रोज ही इसरो के बारे में पढ़ते हैं. तो बोले कैसे पढ़ते हैं? तो वो बोलते हैं, वो लड़का बोलता है कि वो मैडम आके रोज कहती है कि इसरो में लड़के बैठेंगे, इसरो में लड़कियां बैठेंगी. So therefore they said कि every day we hear about ISRO. So this is just on the lighter notes. But then what I'm saying is that teachers are also very this thing, they actually have to see the entire classroom and they should not just be teaching and should not just be focusing on one part of segment of the student. देखिए ऐसा नहीं कि आप सामने वाले स्टूडेंट्स को देख के पढ़ा रहे हो, पीछे के स्टूडेंट्स को आपने मतलब देखा भी नहीं, पढ़ाया भी नहीं, या फिर पीछे वाले स्टूडेंट्स को ही पढ़ा रहे हैं, नीचे सामने फर्स्ट बेंच के स्टूडेंट्स को आपने देखा ही. सो द थिंग इज कि टीचर्स आल्सो नीड टू इंप्रूव देयर प्रोफेशनल स्किल्स एंड देन सोसाइटी टेक्स कॉन्शियस डिसीजन टू ऑपरेट अकॉर्डिंग टू सोशल वैल्यूज.
Then from sociological point of view, यदि justification देखें inclusive education की, तो क्या है कि our society needs the academic institution जिसमें कि values को ज़्यादा जो है encouragement ho. Our society needs the academic institution which values like wider social acceptance, peace and cooperation. And this can come only because with this thing of inclusive education. जिसमें कि हम बात करते हैं कि tolerance होना चाहिए, harmony होना चाहिए, and peace होना चाहिए. So therefore, we need to think and talk about inclusive education, because in the society we need some such values, you know. No matter from whatever background you are coming, we need to accept everyone, and that is how we can bring peace and cooperation. And because segregated education yadi hota hai na, like when we are putting the disabled students in a different college or a different classroom, so what happens? It brings fearfulness, and what happens? It generates true prejudices. So only inclusive education is the mantra, you know. It is the only way which can reduce these aspects, and it can bring friendship, respect, and understanding. That is from the sociological point of view. If you see, so this inclusive education is important. Now, from economic point of view, also, if you see why inclusive education, because higher education is the way to, economic growth. As we know that this is a key driver of economic growth and productivity. Therefore, we actually cannot say kind of put students, in a different distinct setup. Different setup means that we need to give admission to socioeconomic disadvantaged groups. We need to give admission to blind students also. We need to give admission to physically disabled students also, because ultimately when we are talking about, economic growth, so if we will keep them apart, so they will not contribute to the GDP of our country. Right. So only education is the driver of economic growth. So therefore, everyone's contribution is equally important. So, and then at the same time, inclusive education should be cost effective in nature. ऐसा नहीं है कि आपने बहुत ज्यादा फीस रख दी तो वो बच्चा क्या करेगा, वो वैसे ही वो फिजिकली डिसेबल्ड है और आपने उसको जो है हाई एजुकेशन मतलब ऐसे इतने फीस में कर दिया, तो डेफिनेटली इसीलिए तो therefore they are getting scholarships and free ships. Why? Because, and it has to be cost effective in nature, so that they all can be part of higher education. And also it says that out of 700 billion disabled persons of world, 10% disabled people are there only in India. So if those 10% को हम exclude कर देंगे from the main education, so what will happen? There will be we cannot talk about economic growth and productivity. So therefore, some such this 10% disabled population also needs to get the they should get the benefit of higher education. We cannot exclude them. So the idea is to have inclusive education for everyone, no matter whether the student is disabled. Similarly, from humanitarian point of view, definitely from humanitarian point of view also inclusive education is important, because otherwise a feeling of inferiority will come in some such students. If they will not be given a chance to be part of higher education, उस बच्चे में तो इन्फीरियरिटी डेवलपमेंट होगा, उसको फियर रहेगा, उसको प्रेजुडिसेस रहेंगे कि मुझे जो है मैं कहीं किसी भी उसमें मैं इन लोगों से कम हूँ. So therefore, in order to mitigate all these kind of feelings and ideas, and so therefore we need to talk about inclusive education, so that they also feel part of the community. Then as I said, lack of confidence, motivation, positive expectation for achievements are the product of segregated learning environment. Therefore, we cannot segregate them. We need to make them part of the learning environment and part of the classroom, part of higher education. Then from democratic point of view, also inclusive education is important, because India is a democratic country. We are all the time talking कि भाई हमारी तो country जो है democratic country है. So the value of equality is very important. So to bring disabled children in the mainstream education, the fair, ethical and equitable measures need to be taken to avoid discrimination. So from democratic point of view also, inclusive education is important. Now moving ahead with the principles of inclusive education, they are more or less similar, because it says that everyone should feel welcome. So therefore, no discrimination should be there with the students.
equal opportunity or right to education जिसकी बात करते हैं, right to education, that is equal opportunity to be provided to all students. Institution must adapt to the needs of the students, which is, as I said, we need to create ramps, we need to provide facility like wheelchairs भी होना चाहिए classes, schools में, colleges में, universities में, classrooms में, जहाँ पे भी wherever we can actually provide them with the wheelchairs, we need to provide the wheelchairs to some such students. And weak students हैं तो उनके लिए जो है हमको extra classes करनी पड़ती हैं, remedial classes करनी पड़ती हैं, और वर्नाक्युलर बैकग्राउंड के भी कोई स्टूडेंट है तो हमको उनके लिए इंग्लिश लैंग्वेज लैब वगैरह की भी उनकी फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी पड़ती है, बिकॉज unless we kind of provide facilities to the students and we cater to the needs of every student, it is very difficult for some such students to sustain in the higher education or in the classroom. So therefore it is important, that institution needs to adapt to the need of the students. Then equal educational benefits for all students. The students' views are listened and taken seriously. यहाँ पे बहुत जरूरी है कि students के view को भी हमको सुनना है. That is why we cannot say कि भाई teacher centric. It has to be student centric. What is it that they want? Even their views need, their opinions, their views, their opinion are equally important. That's why in many of the committees you'll find that students are part of the community. They are part of the committee. Academic bodies में भी हमारे students रहते हैं. हमारे हर जो important जहाँ decision making होते हैं वहाँ students को भी रखा जाता है. क्यों? So that we actually can understand what is it that they want. हमें उनके views, हमें उनके opinions के बारे में पता चलता है. And just केवल सुनना ही नहीं है. We need, then their views need to be taken seriously also by the administration. Then individual differences between students are a source of richness and diversity and not a problem. As I said, it should not be kind of considered as a problem, but should be considered as a source of richness and diversity. Now, there are some certain barriers which I was telling you, that barriers in inclusive education. So, first thing is, the most important thing is about the teacher's attitude. हमारे attitude भी बहुत matter करता है कि हम inclusive education को कैसे promote कर रहे हैं. यदि हमारे ही attitude ठीक नहीं है, so then of course we cannot, talk about inclusive education. Our methods of delivering the content or the curriculum again is very rigid. क्योंकि यदि हमें पढ़ाना है, किसी ऐसे बच्चों को पढ़ाना है जो विजुअली इम्पेयर्ड है, और हम तो केवल जो है भी पीपीटी से ही पढ़ाएंगे, भले उसको समझ में आ रहा है कि नहीं, उसको हमें क्या मतलब है. सो दिस इज रॉन्ग. एक्चुअली हमको हर तरह की पेडागोजीज को अडॉप्ट करना है, सो दैट हमारा जो कंटेंट है इट रीचेस टू एवरी स्टूडेंट हु इज पार्ट ऑफ द क्लासरूम. किसी को भी ऐसा नहीं कह सकते कि हमारा तो यही मेथोडोलॉजी है जी, हम इसी को स्टिक करेंगे. इट शुड नॉट बी लाइक दैट. देन inaccessible environments, ठीक है, inaccessible environment should not be there. Environment ऐसा होना चाहिए कि मतलब it is like, we are not just only talking about accessibility, we also have to talk about equity. Equity is more important here. तो ऐसा नहीं है कि जो inaccessible environment हो. That's why the reason is many dropouts are there and many repeaters are there. पढ़ते हैं फिर छोड़ते हैं फिर आते हैं. Teachers and schools, they do not support. Parents are not involved. Especially यदि first generation के जो बच्चे हैं उनको तो उनके पेरेंट्स को ही नहीं इन्वॉल्व करा जाता. अरे उनसे पूछ तो लेते भाई उनके फैमिली से कि भाई बच्चा ऐसे क्यों परफॉर्म कर रहा है, व्हाई इज इट ही नॉट एबल टू से काइंड ऑफ पे अटेंशन, उसका कंसंट्रेशन ऐसा क्यों है. ये सब हमको जो है यदि हम उनके स्टूडेंट्स उनके पेरेंट्स से बात करेंगे तो डेफिनेटली हमें प्रॉब्लम्स पता चलेंगी ऐसे बच्चों की. सो इन हायर एजुकेशन यूजुअली द केसेस दैट पेरेंट्स आर नॉट इन्वॉल्व, दे आर नॉट इनवाइटेड. So parents also need to say, they should be called, they should be like, it is the responsibility of the teachers and the administration that to call some such parents. थोड़ा reluctant रहेंगे, लेकिन जब बच्चों के पेरेंट्स से बात करेंगे तो आपको उनके बारे में ज्यादा पता चलता है कि जो बच्चा खुद नहीं बता पाता तो पेरेंट्स बता सकते हैं. Then lack of teaching aids and equipment, then poor quality training of the teachers and administrators also. हमारी ट्रेनिंग ही खुद ही नहीं है, हमारी प्रॉपर ओरिएंटेशन ही नहीं है, तो हम ऐसे बच्चों को हमारे लिए भी दिक्कत होती है. वी आर ऑल्सो नॉट एबल टू एडजस्ट, क्योंकि और हमारे फिर टीचिंग एड्स इक्विपमेंट्स भी ऐसे नहीं है जो कि विच एक्चुअली कैन सपोर्ट सम सच disabled students in the classrooms.
So these all are the barriers. Basically, they are creating challenges for us in coming in this inclusive education. As I said, lack of physical facilities. मतलब बहुत से ऐसे institutions हैं जहाँ मैंने देखा है, like I'm also I visit many institutions as a peer team member. तो नाक में मैं जाती हूँ तो कई बार बोलते हैं कि वी हैव अ सेपरेट वॉशरूम फॉर सच स्टूडेंट्स, डिसेबल्ड स्टूडेंट्स. उनकी फैसिलिटीज अलग ही रहती हैं. तो हमारे खुद की यूनिवर्सिटी में मैंने देखा है कि हर डिपार्टमेंट में ऐसे वॉशरूम्स ही नहीं है. वी डोंट हैव सम सच वॉशरूम्स फॉर डिसेबल्ड स्टूडेंट्स. So this is very important that we need to have a kind of physical facilities for some such students. We need to make ramps बनाने के लिए पैसे नहीं है because we don't have funds. Lack of trained teachers. Then there's this thing of problems of social discrimination. Then there's a problem of emotional problems. Then definitely उस बच्चे को जब समझ ही नहीं आएगा तो कितना emotional turmoil में रहेगा. लेकिन हमारी orientation ही नहीं है. So we are not able to understand the problem of some such students in the classroom. Then of course educational problems could be many. They are not able to cope up. Like weak students are there. कभी language के कारण problem है, कभी कुछ और दूसरी चीजों के कारण problem है. तो ये सारी चीजें जो हैं, they are nothing but they are these are the barriers in coming up for this inclusive education. Now let us move to a very important point, that is approaches to promote access and inclusion in higher education. So as I said, government is promoting or say having lot of some such facilities for some such students, so that they be a part of higher education system. So one of the significant indications of inclusive campus is a feeling that every student is part of the campus and they can form peer groups and actively and peacefully engage in socio-cultural life. It is a responsibility of the institution as well as that of teachers, as well as that of our administrators, to ensure that the campus is inclusive in its day-to-day functioning. Approaches to achieve success and inclusion can be categorized as under two phases. First is at the time of admission and then post-admission. So at the time of admission, as I said, that higher education, say government is providing a lot of opportunities, to the students who are coming from socio-economic disadvantaged group. That is in terms of providing accessibility to some such students in higher education of their preferred choice. The reservation policy, which is a very affirmative action strategy followed in India. That reservation policy is there for SCs, STs, OBCs, So ये जो एक government का जो ये है, that admission in higher education, they have reserved seats. And reservation policy के कारण जो है, वो quota system के कारण जो है, ऐसे socio-economic students, disadvantaged group के students भी आते हैं, then disabled students भी आते हैं, like they also have seats. And then this is like the government is, talking about the value of democracy, equality, and social justice, and therefore reservation policy ensures a certain share of seats occupied by students belonging to underrepresented groups. So reservation policy at the time of admission is very important. Like it is one way of promoting inclusive education in higher education system. It basically provides diversity in the student population in each higher education institution. Then also they are given some incentive schemes. Incentive schemes कैसे होते हैं? It helps students to overcome entry level barrier at the stage of admission. They are being provided with a scholarship, free ships, which is able to meet out with their chunk of this thing, major chunk of this financial problems जो भी उनको आ रही है fees के लिए, तो वो सब कैसे meet out होती है through scholarships and free ships. So scholarship schemes aim to address financial barriers faced by the students. So post-matric scholarship scheme funded by the Government of India is one of the significant sources for students from underprivileged groups. State and public sector organizations also provide scholarship schemes. If it is a private institution, so they are giving some incentives, like in terms of free ships are given. फिर girls के लिए अलग से ये होती हैं, scholarships होती हैं. Females के लिए कई state में they have made free education for female students. I don't know about your other states, but MP में काफी उसमें जो है उन्होंने जो है एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए
बोला है कि भाई लड़कियों को फ्री एजुकेशन हम देंगे। मतलब ऐसे मैं कई बार मैंने ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में गई हूँ जहाँ पे उन्होंने गर्ल्स के लिए फ्री एजुकेशन रखी हुई है। If it is a co-ed college, so they are providing free education to the girls. South में तो काफी जगह पे मैंने देखा है कि they are providing free education to the girls. They are promoting girls education there in the higher education system. So girls को तो normally उनके यहाँ higher education में जो है free education दी जाती है. So this is one way of kind of encouraging students to take admission in higher education institution. Then incentive schemes to facilitate access. Then this hostel facility. भाई जो बच्चे ट्राइबल एरियाज और रूरल एरियाज से आते हैं, सो डेफिनेटली इट इज डिफिकल्ट फॉर देम टू कम्यूट एवरी डे। जो जैसे 250 किलोमीटर 300 किलोमीटर की दूरी पे रह रहा है कोई बच्चा, सो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर दैट स्टूडेंट टू कम एवरी डे। So distance and difficulty in commuting are significant hurdles for students from disadvantaged groups residing in underdeveloped regions and remote villages. Therefore, government is constructing some such hostels for some students. हमारे यहाँ पीछे बहुत से यूनिवर्सिटी के पीछे जो है ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने लड़कों के लिए स्पेशली कॉलेजेस में जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने हॉस्टल्स बना रखे हैं। They are living there. But they have taken admissions there in colleges and universities. So they have special hostels are built on campuses using earmarked funds for the SCs and STs. Then institutional policies to promote diversity and inclusion. I have already given you this example of JNU. Diversity-oriented admission policies followed by JNU, where deprivation points to consider the locational background of the aspiring candidates. And IIMs maybe they have kept some few seats reserved for female students. Gender diversity initiative by providing additional points for women candidates, so that they talk about equity there. कि भाई girls हैं तो क्या हुआ, उनके लिए भी कुछ उन्होंने पॉइंट्स रखे हैं कि यदि इतने बच्चों आप आओगे तो हम आपको एडिशनल 3 पॉइंट्स देंगे यदि आपका कहीं स्कोर कट ऑफ स्कोर से कम है। So they have kept some 3 points, कि that if female students are going to come, so we will give them 3 marks. जो scores हैं उसके add हो जाएंगे उन points में, तो definitely they will be at par with the marks of other students. So definitely they are going to get advantage, So उनके female students भी admissions लेते हैं IIM में. So these are some of the examples of promoting diversity and inclusion in higher education. Then IITs have a special preparatory programs, like institutes provide admission to SC and ST students whose scores are the below cutoff mark, and these students are admitted to preparatory courses for 1 year. जैसे 2 सेमेस्टर के लिए उनको preparatory course में रखते हैं, क्योंकि जैसे मैं I gave you example कि that vegetable vendors के भी बच्चे आ रहे हैं और ऑटो रिक्शा पुलर के भी बच्चे, ड्राइवर के भी बच्चे आ रहे हैं, तो उनको क्या है दे SC ST बैकग्राउंड के हैं और उनका स्कोर जो है बिलो कट ऑफ मार्क है। तो definitely if you put them say in the regular class, they will not be able to cope up. So उनको क्या करते हैं, they are admitted to preparatory courses, and after 2 semesters when they are at par with the this thing of other students, तो फिर उनको जो है रेगुलर क्लासरूम्स में रखा जाता है। Upon completing this course, students are eligible to take admission in first year UG programs. So there are some IITs who are doing this kind of thing also. That is, they are offering preparatory courses for some such students who are not at par with the performance of the other students. Then what other post? एक तो आपने admission phase देखा, then second is post admission phase. So after that, once the student gets admission, तो उसमें भी फिर उसके बाद बहुत सारे चैलेंजेस हैं स्टूडेंट्स के पास में, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि भाई टीचर्स का भी ओरिएंटेशन सही नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर का वो ओरिएंटेशन ठीक नहीं है, इंस्टीट्यूशन का ठीक नहीं है, खुद स्टूडेंट्स के उनके ग्रुप के जो बच्चे हैं उनका ओरिएंटेशन सही नहीं है। सो बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं और फिर क्या होता है, व्हेन दे फील दे डोंट फील वेलकम्ड, they feel somewhere कि भाई they are not being treated properly, तो then definitely there is going to be a case of dropout. तो इन सब चीजों को ओवरकम करने के लिए भी access to higher education is only part of equity in higher education. It is essential to ensure that students are firstly admitted irrespective of background, and then therefore after that they are again given many facilities, for instance कि एक तो आपको scholarship और free ships रहती है, इसके अलावा आपको बहुत सी दूसरी चीजें रहती हैं जिसमें आपको और भी पैसे की जरूरत होती है, लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू हैव टू बाय अ बुक और समथिंग सम इक्विपमेंट, सो क्या करना है, सो सम ऑफ देम आर ट्यूशन फीस भी वेव ऑफ होती है, दे आर गिवन स्टाइपेंड्स,
They are also being provided with book bank facilities. They are provided with the opportunities to earn during study programs, जिसको आपके यहाँ भी होगा, earn while you learn programs जो होते हैं ऐसे बच्चों के लिए, with which they can support themselves, you know, जो उनकी day to day जो needs होती हैं earn while you learn में, उन बच्चों से उनको काम भी कराया जाता है, and they are given some kind of a monetary support so that, you know, they are able to meet with the day to day requirement, whatever day-to-day requirement is there for some such students. So वो भी एक रहता है, उन बच्चों को के लिए facilities ऐसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज में प्रोवाइड की जाती हैं. Then they are also provided with the remedial classes. Remedial classes के जो बच्चे हैं उनको जो है vernacular medium के हैं, तो उनके लिए जो है अलग से क्लासरूम होती है, उनके लिए अलग से लेक्चर होता है, उनके लिए peer learning के भी facilities दी जाती है. जो एक हाई अचीवर स्टूडेंट होते हैं उनको, जो कम वीक स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में रखा जाता है, एंड उनको पीयर जो ट्यूटरिंग होती है वो भी करवाते हैं क्लासरूम्स में, हायर एजुकेशन में, एंड सो दैट दे बिकम एक्टिव, so they are able to actively participate in the classroom discussions. They are also being provided with the language labs, you know, academic infrastructural and facilities, language labs हैं, audio video classrooms हैं, book banks है, इस तरह की facilities भी बच्चों को, स्टूडेंट्स को जो SDGs ग्रुप के हैं या विजुअली इम्पेयर्ड हैं, ये जो डिसेबल्ड ग्रुप स्टूडेंट्स हैं, उनको सारी एक्स्ट्रा जो फैसिलिटीज हैं जो इंस्टीट्यूशन को प्रोवाइड करना चाहिए भी, और करना चाहिए क्या मतलब आजकल दिया जा रहा है. फोकस इज मोर ऑन दैट. देन टीचिंग स्ट्रेटजीज फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन. दिस इज बेसिकली फॉर द टीचर्स कि हमें जो है फोकस करना है कोऑपरेटिव लर्निंग के लिए, पीयर ट्यूटरिंग के लिए और मल्टी सेंसरी टीचिंग के लिए. There should not just be one pedagogy which a teacher should use, but should have a multi-sensory teaching in the classroom so that everyone gets the benefit. Now, towards the end, I just would like to quote some of the beautiful quotes given by Abdul J. Kalam and Vivekanand ji. Abdul J. Kalam कहते हैं कि when learning is purposeful, creativity blossoms. कितनी मतलब खूबसूरत लाइन है कि when learning is purposeful. यहाँ purposeful किसके लिए बोला, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हो रही है कि when learning is purposeful, creativity blossoms, and when creativity blossoms, thinking emanates. When thinking emanates, knowledge is fully lit. When knowledge is fully lit, economy flourishes. So ultimately हमको जो है यदि कंट्री को आगे लेके जाना है तो हमको जो है लर्निंग जो है वो पर्पसफुल रखनी पड़ेगी, और जब लर्निंग पर्पसफुल रहेगी तो क्रिएटिविटी होगी, और क्रिएटिविटी होगी तो डेफिनेटली थिंकिंग भी ब्रॉडन होगी, और थिंकिंग जब ब्रॉडन होगी तो नॉलेज भी अच्छी वो जो है अच्छे से लोगों को मिलेगी, और फिर अल्टीमेटली इट विल लीड टू अ गुड इकोनॉमी. देन स्वामी विवेकानंद का ये कहना है कि वी हैव टू टॉलरेट द डिफरेंसेस. वी जस्ट नॉट ओनली हैव टू टॉलरेट द डिफरेंसेस, वी नीड टू एक्चुअली कहते हैं जिसको कि द डिफरेंसेस should be, you know, respected. The differences should be respected and it should be celebrated. Actually, it should be celebrated. Diversity should be respected and celebrated. Inclusive education basically helps creative, cohesive societies. जो कि पहले भी हमने बताया. So the idea is to play, learn, and grow together. It should not be just only one segment of the society who gets an opportunity to learn, but it should be like we need to play together, we need to learn together, and we need to grow together. So diversity is our strength, equity is our commitment, and inclusion is our goal. So this is what I just want to tell something about student diversity and inclusive education. When everyone is included, everyone wins. So thank you so very much. If you have any questions to ask, please feel free to ask. If you have any, you want to make a comment, you want to add something to it. Ma'am, good afternoon. Good afternoon, sir. जी अभिमन्यु जी क्या पूछना चाह रहे हैं? मैडम एक तो क्वेश्चन है मेरे इस इंक्लूसिव एजुकेशन के रिगार्डिंग. बिल्कुल बिल्कुल बताइए. कुछ इसमें ऐसे जैसे आपने अप्रोचेस मेंशन की एनईपी में, इसके अलावा कुछ एक्सक्लूसिव सच कुछ प्रोविजन है कि जिससे इंक्लूसिविटी बढ़ाई जा सके या जीईआर को एक बेटर रेशो में इंप्रूव किया जा सके? मैम जीईआर तो सर एनईपी का पार्ट ही है ना, बिकॉज अभी जैसे एज यू नो कि दैट अभी करंट जीईआर इज 27.1%. आप यदि एनईपी के डॉक्यूमेंट को उठा के पढ़ें तो उसमें बिल्कुल बहुत क्लियर दिया हुआ है कि they want to increase this GER by 50% by 2030, और अभी तो 2024 स्टार्ट हो गया.
इसको आप कैसे बढ़ाओगे? आप इसको कैसे बढ़ाओगे? वो तभी बढ़ाओगे when you will actually be talking about inclusive education. तो inclusive education में यही तो बात हो रही है कि जो सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप के जो बच्चे हैं हमारे, जो आ रहे हैं ट्राइबल एरियाज के, रूरल एरियाज के, डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं या डिसेबल्ड जो लोग हैं, उनको भी हमको हायर एजुकेशन में लाना है। एंड उनको कैसे लेके आना है, वो इन सब पॉलिसीज जो हमारी गवर्नमेंट ने रखी है उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए। So this, as a teacher, we need to understand that they are also part of the society. We cannot exclude them by not giving them admission in higher education institution. We need to give them all facilities. We need to provide all kind of support to some such people, because ultimately they are part of our community and part of our society. We cannot exclude them. We need to include them. We need to encourage them so that they all can come and take higher education, and they're part of higher education, and they take admission in colleges and universities, and then only we can increase the GER, and ultimately GER बढ़ेगा तो आपकी कंट्री की इकोनॉमी भी बढ़ेगी, क्योंकि जब पढ़ता है आदमी, पढ़ने लिखने से इकोनॉमी भी बढ़ती है, पढ़ने लिखने से उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड भी ऊपर होता है। तो वो सोशियो इकोनॉमिक, उनको जो डिसएडवांटेज ग्रुप जो बोलते हैं, आदमी का जो है वो जो सोशियो इकोनॉमिक जो वो रहता है ना कि भाई उसका स्टेटस कैसे बढ़ेगा, जब वो एजुकेशन लेके अच्छी जॉब करेगा तो उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी बढ़ेगा। तो इसलिए इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत जरूरी है इन लोगों के लिए भी, जो इस तरह के रूरल एरिया, ट्राइबल एरिया और जो डिसेबल्ड लोग हैं, उनको यदि हम अलग सेगमेंट में रखेंगे और उनको वो प्रोविजन नहीं देंगे, सो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स तो आएंगी सर सोसाइटी में। उनको अलग तरह का जो है उनके उसमें जो है मोटिवेशन भी नहीं रहेगा उनको, और एक अलग तरह का डर रहेगा। एक जो कोहेसिव सोसाइटी की बात हो रही है, वो कोहेसिव सोसाइटी तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि वो हमेशा कटे से रहेंगे पूरी सोसाइटी से। ओके मैम, इसमें थोड़ा सा और एक मेरा डाउट था। हम GER को एड्रेस कर रहे हैं, लेकिन इसमें कहीं पे भी ट्रांजिशन रेशो को, जो खासकर यूजी से पीजी का हम अगर डिस्कस करें, जैसे कि यूजी में मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस दे दिए हमने, तो क्या इससे हमारा यूजी टू पीजी ट्रांजिशन रेशो ये हैम्पर नहीं हो जाएगा कहीं ना कहीं? नहीं सर, वैसे भी अब तो पीजी तो 1 ही साल का होने जा रहा है। अब उसमें कहाँ ड्रॉप आउट का कोई स्कोप तो रह ही नहीं जाएगा। यूजी में तो फिर भी 4 साल का है, तो मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट रहेगा, और जिस बच्चे को जो यूजी कंप्लीट करेगा तो उसको तो ऑनर्स की डिग्री रहेगी, और ऐसे बच्चे बहुत फिर आखिरी में कम ही बचेंगे ना जो रियली मास्टर्स के लिए जाएंगे, और जो आगे पीएचडी करना चाहेंगे वो जो है आगे मास्टर्स तक जाएगा। तो सिर्फ ये ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो पे ही हमारा फोकस है, ट्रांजिशन रेशियो हम एनईपी में कहीं डिस्कस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? मेरा ये भी कंसर्न है, क्योंकि ट्रांजिशन रेशियो हम एनबीए फाइल करते हैं, ट्रांजिशन रेशियो सबसे पहले पूछते हैं वो। अभी तो उसकी कोई सच तो कोई चर्चा हुई ही नहीं है, मेरे को तो लग ही नहीं रहा कि एनईपी में कहीं इसका जिक्र भी किया हुआ है। जी मैं यही सोच रहा था कहीं मैंने ही डॉक्यूमेंट कुछ गलत ना, कुछ पेज मुझसे मिस ना हो गए हो। नहीं सर, आप बिल्कुल सही हैं। अभी तो हमें सिर्फ उनको जो है ग्रेजुएशन तक बच्चों को किसी भी तरह से पढ़ाना ही है, जिससे कि हम बोल सके कि भाई हमारे यहाँ भी जो है, यदि हम डेवलप्ड कंट्री की बात करने का सोच रहे हैं, दैट इज अ ड्रीम ऑफ आवर कंट्री, कि हम उसको वापस से उस तरह से, किसी समय में जो बात होती थी कि इंडिया की ओर पीपल यूज्ड टू लुक इनटू आवर डायरेक्शन ऑफ इंडिया, भारत की ओर देखते थे, विश्व गुरु बनाने का जो सपना है, तो बच्चों को कम से कम एक कॉलेज एजुकेशन तक खींच के लाना ही अपने में बहुत बड़ा भी चैलेंज है। तो कम से कम उनको जो है कॉलेज की जो एजुकेशन है, ग्रेजुएट लेवल तक भी बच्चा पढ़ ले तो डेफिनेटली फिर उसका ओरिएंटेशन किस तरह का बनेगा आगे, कि दैट ही वांट्स टू अगेन गो फॉर हिज पीजी एंड डू हिज पीएचडी। यदि उसको टीचर बनना है तो डेफिनेटली वो मास्टर्स भी करेगा, पीएचडी भी करेगा सर। ओके, थैंक यू। या वेलकम सर। जी, एनी अदर क्वेश्चन? चलिए, so with this we come to an end of this session. It was a very enriching session, ma'am.
दो ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको हम बहुत सालों से डिस्कस कर रहे हैं, पर स्टिल वी आर नॉट एबल टू मीट आउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सेम, एंड स्टिल लॉट नीड टू बी डन इन दिस। जो ये एरिया है डाइवर्सिटी को कैटर करना और इंक्लूसिविटी को इंक्लूड करना, ये बहुत ज़रूरी भी है हायर एजुकेशन में, और मैम ने इसके बारे में बहुत सारी डिटेल्स में बहुत सारे डेटा और फैक्ट्स के साथ इसको हमें बताया है। वी आर रियली थैंकफुल टू यू फॉर दिस वेरी वैल्यूएबल सेशन, और बहुत बहुत धन्यवाद फॉर स्पेंडिंग वेरी वैल्यूएबल टाइम। अरे आप तो हमारे अपने हो, आप हमारे अपने हो, आपको नाम बना भी नहीं कर सकते। बीएचयू में बना कर दिया, बीएचयू में बना कर दिया, मैंने कहा शिफाली मैम को मैं मना नहीं कर सकती। Thank you, so nice of you. Thank you, ma'am. Thank you for giving this opportunity to me, and really, I'm kind of, just going to join my own NEP program, जहाँ पे सूद सर ले रहे क्लास, उनको थोड़ा सा अटेंड करके then मीटिंग अटेंड करने जाना है। So thank you so much. Thank you so very much. तो अब हम अपने अगले सेशन की तरफ चलेंगे, और राहुल, are you there? Yes ma'am, I'm there. एक बार चेक करिएगा, मनसब सर ने ज्वाइन कर लिया है क्या? मैम अभी तक तो नहीं किया है। So he'll be joining. Just give me a minute.